आज आपको कोई ढिंचाक इंट्रो नहीं मिलने वाला, सच में कोई ढिंचाक इंट्रो नहीं है. दिस इज अ प्रॉपर मैसेज फ्रॉम अंकित, यस अंकित ऑफ ऑलमाइटी ब्लूज एफसी टू एवरीवन वाचिंग. हाँ, सब लोग प्लीज गौर से देखेगा. यस, आपको सर्टेनली मिलेगा एक अपडेट अबाउट चेल्सी फुटबॉल क्लब ओनरशिप का जो हो रहा है, क्योंकि यहाँ बहुत बढ़िया न्यूज है या बहुत बड़ी न्यूज है, आई डोंट नो, आप डिसाइड करिए. लेकिन वो तो मिलेगा ही, लेकिन सम पर्सनल एक्सपीरियंस. और हाँ, मैं तो यार ऑफेंड होता हूँ, इसीलिए मैं चाहूंगा आप लास्ट तक देखिए, समझिए व्हाट इट इज. एक सीख मिलनी चाहिए सबको, और दैट्स इंक्लूडिंग एवरीवन जस्ट आउट देयर. ये मैसेज बहुत स्ट्रांग है, सो प्लीज प्लीज डू वॉच टिल द एंड. एंड यस, आपको अगर अच्छा लगता है हमारा कंटेंट, एज ऑलवेज डू लाइक द वीडियो, डू स्मैश दैट बेल नोटिफिकेशन आइकॉन, क्योंकि यस वी विल रीस्टार्ट लाइव शोज वेरी सून अगेन एज ऑलवेज. एंड लेट्स गेट इनटू इट. बिकॉज यस, चेल्सी फुटबॉल क्लब इज इन डायर स्ट्रेट, कोई सीक्रेट ही नहीं है. बहुत सारे रूमर्स फैल रहे हैं यार. इट्स अबाउट द निक कैंडी फैमिली, व्हाट नॉट. निक कैंडी ट्राइंग टू गेट इन टच विद जियानुका वियाली, जॉन टेरी 10% स्टेक एंड व्हाट नॉट. लेकिन लास्ट 24 आवर्स में जो न्यूज फैल रही है वो यही है. आई विल कोट एब्सोल्यूट चेल्सी हियर. एब्सोल्यूट चेल्सी जो कोट करते हैं एथलेटिक यूके को. देयर आर 4 bids that appear to have the inside track for Chelsea. Todd Boehly's consortium, the Ricketts family's consortium, Sir Martin Broughton's consortium, और वुडी जॉनसन. Yeah, that's not a consortium. एक अकेला बंदा है जो कर रहा है. Now again, we have covered a lot on this channel. हाँ, by the way, we will come to the message I'm talking about very strongly towards the end. तो आप बने रहना. लेकिन first and foremost, let's go through each of these consortium. क्या चल रहा है? What is anticipated? तो टॉड बोहली's consortium हमने काफी कवर किया. आई थिंक इट वाज टॉड बोहली विद गोल्डस्टीन एंड ऑफ कोर्स हांसजॉर्ग विस. हांसजॉर्ग विस है, उनका कुछ पर्सनल 36 का आंकड़ा था रोमन अब्रामोविच के साथ, पोटेंशियली, आई डोंट नो. दैट्स व्हाई ही इज वांटिंग टू बाय फ्रॉम रोमन अब्रामोविच टू जस्ट टीच हिम अ लेसन. वो रूमर था. टॉड बोहली खुद एक स्पर्स सपोर्टर रह चुके हैं. ऑफ कोर्स दे हैव अ स्पोर्ट्स कनेक्शन एज वेल बैक इन यूएस. So there is some kind of as I don't know, आप बोलोगे misfit या fit, something is there. And of course Goldstein, I believe is probably a Chelsea fan, correct me if I'm wrong in the comment section. लेकिन उनकी consortium is US based, उनके पास पैसे है. निक कैंडीज में मेंशन नहीं करते आप चेल्सी स्ट्रेंजली, सो वो लगता है बाहर है among the top favorites. Now I'll cover basically एक और सर मार्टिन ब्राउटन्स कंसोर्टियम. और इसीलिए मैं आऊंगा क्योंकि हाँ, आप थंबनेल से पता चल गया होगा क्या है. से नो टू रिकेट्स. Yes, that is probably the main topic of discussion. And of course, I totally do not condone जो रिकेट्स की है, and I totally support say no to rickets. Let's be very clear first and foremost. और मैं ये भी बोलना चाहूंगा, यहाँ साउदीज की मैं बात किया ना ऑन द थंबनेल. यस, दे आर नॉट फेवरेट्स, बट अगेन देयर आर सम रिपोर्ट्स और सर्टेन ओपिनियन जो फैल रहे हैं जो मैं अग्री नहीं करता हूँ. इसीलिए मैं रिक्वेस्ट करूंगा बने रहो लास्ट तक, बहुत इंपॉर्टेंट. बट आई फर्स्ट कम टू सर मार्टिन ब्राउटन्स कंसोर्टियम. और ये सर मार्टिन ब्राउटन्स कंसोर्टियम इज बैक्ड बाय वन विवेक रानादीव. सो विवेक रानादीव कौन है? विवेक रानादीव इज एन अमेरिकन इंडियन बिजनेस एग्जीक्यूटिव जो is the chairman of Sacramento Kings NBA team, right? तो obviously ये एक टाइकून है, बिजनेस टाइकून जो टेक स्पेस टिपको सॉफ्टवेयर के सीईओ है. So obviously well to do है, but they are from the US. Now just because they are from the US, they don't have any connection with Chelsea. People have judged और people बोले नहीं यार विवेक रानादेव कहाँ है. I have even seen lot of tweets. I know it's just tweets. मैं react नहीं करना चाहता हूँ, लेकिन I think lot of them have said this is an alien. Why is an alien, boss? Why is an alien? Is it because he is coming from Indian origin? I'm really sorry to say. Please tell me. Please correct me. जो भी लोग किए हैं ट्वीट वो मुझे बताइए कमेंट सेक्शन में. प्लीज बताइए. इफ मुझे करना ही था फेवर, और सबको मालूम है मेरा क्या था प्रेफरेंस. अगेन मैंने बोला था मैं एक सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट नहीं हूँ. इट बी रॉन्ग ऑफ मी. आई एम नॉट बेसिकली क्वालिफाइड टू talk on this topic on what is the decision. I just want Chelsea's owners to be trusted, current owners that is, of course the management, वो सही decision ले, and I trust them, I'll back them. और वो सही decision ले for the long term is what I'm wanting. I did not say that this is right or not for a certain reason wholeheartedly. और वो था क्योंकि यार भाई मुझे पता ही नहीं इनके बारे में as much. और If I really wanted, मैं विवेक रानादेव को पहले दिन से बोलता नहीं यही होना चाहिए ओनर यार, यही होना चाहिए. इट इज अ कंसोर्टियम बैक्ड बाय विवेक रानादेव एंड इंडियन. मैं इंडियन, मैं क्यों नहीं बोलूंगा भाई. लेकिन फिर भी मैंने नहीं बोला. क्यों? क्योंकि आई डोंट थिंक ज्योग्राफी कम्स इनटू पिक्चर. Geography should not come into picture. It is Chelsea Football Club. It is a club in England which is run by from 1905, right? We have a history. Trust me. And people who challenge, trust me, we have an history. Okay, I don't want to say that, okay, just because an Indian,
वो होना चाहिए, अगर हो तो अच्छी बात है, but I will not favor it because of that reason. Or similarly, you cannot say that this person is not qualified because of that reason as well, right? So let's get it right. And why am I talking all this, right? I'm just talking about the second consortium, that's Sir Martin Broughton's consortium यहाँ. लेकिन सऊदी का क्यों है फोटो in the thumbnail? मैंने एक्चुअली ट्वीट देखा और देयर आर पीपल, अगेन विदाउट टेकिंग नेम्स, देयर आर पीपल आउट देयर जो मैं जानता हूं पर्सनली, एंड दे हैव सेड नो टू साउदीज एज वेल. व्हाई? An entire state, an entire country, each and everyone involved, each and everyone living there is 100%, you know, as a matter of fact, लौंडा कहीं से आता है और बोलता है कि यार ये सऊदी है तो नहीं होगा. ये कौन, किसका रूल है यार भाई, किसका रूल है ये? रेसिज्म नहीं तो और क्या है भाई? और say no to Ricketts, I absolutely support that. Say no to Ricketts. क्यों? Let's get to that. और आप सेम लोग हो जो बोल रहे say no to Ricketts और say no to Saudis also, right? क्या प्रूफ है? say no to Ricketts का प्रूफ है प्रॉपर, राइट? प्रूफ है ईमेल्स में. और यहाँ पर मैं पढ़ने वाला हूँ एक बोरिंग सा ईमेल आपके लिए, लेकिन let's hear it out. Yes, let's hear it out. Absolutely, we should hear it out. Joe Ricketts, the father of the family, was alleged to have written an email in 2012 which was anti-Muslim, writing Christians and Jews can have a mutual respect for each other to create a civil society, as reported by Splinter. As you know, Islam cannot do that. Therefore, we cannot ever let Islam become a large part of a society. Muslims are naturally my enemy due to deep antagonism and bias against non-Muslims. Finally, Joe wrote an apology on his personal website recently, responding, I deeply regret and apologize for some of the exchanges I had in the emails. Sometimes I received emails I should have been condemned. Other times I've said things that don't reflect my value system. I strongly believe that bigoted ideas are wrong. करेक्ट किया है. होपफुली रियलाइजेस व्हाट ही इज डन, राइट? एंड आप बोलोगे यार पूरे फैमिली को क्यों सजा मिलना चाहिए? एब्सोल्युटली मिलनी चाहिए. यू आर चेल्सी फुटबॉल क्लब, इफ यू आर ओनिंग, राइट? आप बेसिकली उनकी आइडियोलॉजीज है. इट्स नॉट लाइक वन वर्ड आंसर. एक प्रॉपर ईमेल भेजी रही है और एक बार नहीं, इनफैक्ट 2 बार भेजी रही है फ्रॉम व्हाट आई नो, राइट? इवन आई थिंक मिरर और डेली मेल भी ये चीज बताए सर्टेनली. So it's more to it, right? And of course, and I'm talking about basically a consortium जो basically is a co-owner of Chicago Cubs, by the way. तो ऐसा नहीं कि उनके पास पैसे नहीं है, पैसे काफी है. But the Ricketts family, I'm sorry to say, अगर आपके basically I know directly नहीं involved होंगे जो Ricketts अभी, I don't know, but it has to basically stop there. I don't need this to be चेल्सी फुटबॉल क्लब ओनरशिप का स्टोरी एज इट इज. हमें पता है यार चेल्सी फुटबॉल क्लब में क्या स्टोरीज जाते हैं. और अगेन, एज रिपोर्टेड बाय एब्सोल्यूट चेल्सी, द रिकेट्स फैमिली आर फ्लाइंग टू लंडन एज पार्ट ऑफ द बिड टू बाय चेल्सी. इट रिमेन्स अननोन इफ दे विल बी इंक्लूडेड ऑन रेन्स शॉर्टलिस्ट, but they are coming to meet key stakeholders including the Chelsea supporters trust. Now उनको मालूम है ये no to Ricketts campaign चल रहा है सोशल मीडिया में, and that is why apology भी आई. That is probably right. But again, एक और email थी I think from the 80-year-old sent to Pete Ricketts in 2010, and that is alleged to read, I think Islam is a cult and not a religion. Christianity and Judaism are based on love, whereas Islam is based on kill the infidel, a thing of evil. I'm not going to comment on that, whether it's right or wrong. Absolutely, I do not condone it. But the fact is, he shouldn't have sent that. And if once he sent that, whether he is corrected or not, fine. कुछ personal attack, personal charges नहीं होंगे उनके against. But he cannot be owner of Chelsea Football Club, or his family cannot be owner of Chelsea Football Club. और that is because हम एक represent करते हैं, एक responsibility रखते हैं. और ये सब क्यों बोल रहा हूँ ये सब? Coming, I know I'm so charged up. Why am I so agitated आज? इतना agitated क्यों? चौथे में आते हैं यार वुडी जॉनसन पे आते हैं. वुडी जॉनसन कौन है? वुडी जॉनसन है एक अकेला ओनर जो बेसिकली बिड कर रहा है, राइट? पोटेंशियल ओनरशिप के लिए. अब ये आप बोलोगे रोमन अब्रामोविच टाइप है तो विल बी गुड, मे बी ही इज अ फैन, बट ही इज अ जेट्स ओनर, न्यूयॉर्क जेट्स ओनर बाय द वे. सो आई एम नॉट श्योर वो रखते हैं इतने सारे कनेक्शंस विद चेल्सी. बट उनकी भी स्टोरी है बैक इन द डे. आई थिंक जेट ओनर वुडी जॉनसन मेड inappropriate or insensitive comments pertaining to religion, sex and race in his post as US ambassador to the United Kingdom, according to a US State Department report obtained by ESPN. That basically came from 2020, if I'm not wrong. So that is a problem. The Jets owner reportedly made racist comments regarding black men and questioned why the black community celebrates Black History Month. He also allegedly made a slew of sexist comments by noting that he preferred working with women because they were cheaper and worked harder than men. Absolutely. His ideologies wale, as in I don't even have words to say. They shouldn't be involved with Chelsea Football Club. I feel so strongly against that.
बट कमिंग बैक टू मी, ये मेरे से क्या रिलेशन है, क्या पर्सनल मैसेज होगा? फर्स्ट ऑफ ऑल क्लियर होगा क्या कॉमन फैक्टर है, रिकेट्स फैमिली आउट, वुडी जॉनसन आउट, राइट? नो डिस्क्रिमिनेशन ऑफ एनी सॉर्ट। अगर आप इतना भी रखते हो ना, नहीं, अगर सच में नहीं रखते फिर भी नहीं, क्योंकि आपने लिखित में दे दिया वो चीज, आपने बोला है इन द पास्ट। इट कैन नॉट बी, चेल्सी फुटबॉल क्लब कैन नॉट टेक मोर बैगेज, प्लीज, सॉरी टू से, एब्सोल्युटली नो। टॉड बोली बचते, मार्टिन ब्राउटन बचते, और व्हाट अबाउट द साउदीज? यहीं पर आ रहा हूँ वापस, क्योंकि हाँ, आई हैव फेस्ड इट पर्सनली, मैं बोलना चाहूंगा अगेन, आई हैव नॉट शेयर मच अबाउट मी माई सेल्फ, एंड आई फेल्ट ऑलवेज देयर इज नो नीड टू शेयर मच, एब्सोल्युटली। और अभी भी मैं विदाउट गिविंग थिंग्स अवे, मैं बोलना चाहूंगा, बिफोर एनीथिंग डू नॉट जज पीपल, डू नॉट जज। There have been a lot of people questioning me throughout my life. I am what I am because of what I have been, brought up with. जो मेरे आइडियोलॉजी से, जो मैं बेसिकली intake लेता हूँ, और that is various sources. I am not what I am because of the place where I live in. The place where I live in can only influence me to an extent. It cannot create me. It cannot create my mindset. My mindset comes from what I read, what I basically talk to people, what I eat, maybe, right? And that is what I react with, not because of the place only. Place is part of it. सऊदी, जो लोग बोल रहे हैं सऊदी मना करो, भाई साहब, आई डू नॉट कंडोन एट ऑल जो हो रहा है सऊदी में, जो बेसिकली जो अत्याचार होते हैं, दोज थिंग्स, ऑयल मनी एंड व्हाट नॉट, एब्सोल्युटली नॉट, आई डू नॉट कंडोन दैट। लेकिन आप यार कहीं के लौंडे आकर बिना कुछ नॉलेज के, बगैर कुछ भी फेक के कुछ भी लिखते हो यार, और आप स्पेशली व्हेन यू हैव 60,000 पीपल फॉलोइंग ऑन ट्विटर, बॉस, you have a responsibility, people follow you. You can't just say, utter rubbish there, okay? So better know your facts before actually telling the things. And if you have told that, put in the facts. क्यों बोले आप? Put in the facts before going back, right? So please, people have judged me. Okay, just to share with you, I come from North Indian parents, right? And basically I am born and bred in South India. Entire my childhood. Oh, Kannada gotta. What is that, boss? What is that? Yes, of course I know Kannada. I am born and bred here. I love Bangalore. RCB, Almighty Blues cricket, I follow like crazy. I am the biggest fan of RCB that can be, and I'm not even boasting. Trust me, that is the level of dedication I have. And you are questioning me, Kannada gotta? Really? And then when I go out, मैं पुणे रहा हूँ, for people out there, I've shared before as well, when I go to Pune, they treat me like a South Indian. Boss, India is one, boss, India is one. And not only in India, I went abroad for a few years. They treat every Indian the same. They think Indian culture is the same. What rubbish is this, boss? What rubbish is this? India has like umpteen number of cultures inside it. Do you even know it? And just not about India. It's just not about me. It's the rule of the world. आप judge मत करो किसी के geography से. हाँ, certain traits हो सकते हैं उसमें, लेकिन that doesn't mean that every person from that particular space is the same. Every individual is different. Every business consortium might be different. They can come up with different ideas. Just because a person or a consortium is from US, Saudi Arabia, doesn't make them bad or good. आप क्या जानते हो? घंटा जानते हो आप इनके बारे में, ठीक है? तो before actually putting in some rubbish, you know your facts, and if you have put those as facts, please reproduce those facts and tell me why, right? Don't just become गायब. So coming back to the bottom line, भाई मुझे जज मत करो, किसी को जज मत करो, कंसोर्टियम को जज मत करो, लीव इट टू चेल्सी, हैव ट्रस्ट, दे हैव सच एन ओल्ड हिस्ट्री एंड दे नो देयर बेटरमेंट एज वेल. We don't want to judge and then pre-qualify or disqualify them, ahead of time without even knowing all the facts. लेकिन हाँ, I do not condone racism of any sort. So no to Ricketts, no to Woody Johnson, absolutely yes, right? Whether it was intended, not intended, doesn't matter. They've done it once, they may do it again. We don't want more baggage, right? But what about this question? Trust me, I don't want to say it, but I have to say it. There are people in my space who actually ask me what is my age. Ek baar nahi, numerous occasions. What the fuck? How does it, react to you, man? How does it even relate to you? How does it relate to you? क्या मेरा काम मेरा एज से ना निर्भर करता है? Really? After having ideals in the sporting world that we've had, Thiago Silva, Cristiano Ronaldo and whatnot, are you really talking about age? And they really want to know about more about my personal life. Why? When I am happy to share with you, I will share it. It has nothing to do with what content I produce, what is my footballing knowledge, what is my cricket knowledge, what I speak, what my views are. Get it?
You better get it, whoever's watching. I hope it reaches to the people I intend to reach. And please do retweet if I am, putting it as a tweet. It's very important. People get a life. Get a life. Just to produce content, you cannot just say some rubbish out there, right? And you cannot just say, "मैं आप." Trust me, people who actually question those things to me as well, I keep quiet because yes, I know I have seen life more than them, and that's a fact. But again, that doesn't make me more qualified, does it? It doesn't. That's the point. So you need to understand that. And same thing for football fans. Try and trust your club. Just be there. Of course, you have a campaign, back it. But you don't put rubbish out there without facts. You don't just follow the crowd. Have some facts with you. But anyway, sorry, I know I'm usually not this type. I'm on a rant right now. But comment करिए नीचे आपको क्या लगता है क्या होने वाला है चेल्सी फुटबॉल क्लब का. Yes, it's going through a massive time right now. So we cannot worsen the situation by putting out things there which are not facts. Two of the consortiums should be eliminated because of facts I stated, and those have been quoted, so it cannot be wrong. The other two, it's in the air. और बाकी भी है, ऐसे नहीं कि बाकी कैंसिल कर दिए गए. निक कैंडी है, साउदीज है, नहीं. और यार प्लीज ऐसे मत बोलना भाई कि anyone from a particular space in the world, is questionable. Absolutely not. I don't believe in it at all. Even US की बात करते हैं, मैं ऐसे नहीं हूँ कि यार I am supporting an Asian or a Middle East kind of a space. I'm saying in US, why judge? Yes, of course you can take bad examples, but there are good examples as well. Right? I didn't back Vivek Ranadive despite him being an Indian origin person. Like, let's go with qualifications. And again, I am not even qualified to do that. So people who are, leave it to them. आप जबरदस्ती content और retweets और likes के लिए वो सब मत करिए. ठीक है? You better get it. You are offending a lot of people, and that brings a great excuse for me to come out and just share what I have been going through as well as a person throughout my life. Anyway, that's it. Rant हो गया आज के लिए. And yes, I'm sorry if I have been a bit louder than what I should have. I'm sorry if I have, unknowingly offended anyone, but I didn't mean to at all. My intention was, do not judge so much without knowing all the facts. Do not comment. Do not say in public forums, especially when people will judge you. People who may not be, as mature as maybe you are or are not. So be careful of what you write, especially when you have a following. That's it. Take care of the Chels. Come on.